like bank because insurance claim it is not admitted. It is admitted, no? Insurance claimed का मतलब admitted. Claimed और admitted एक ही है. Okay? Claimed, admitted, insurance claim lodged, okay? Accepted, claimed, admitted, ये सब एक ही है, मिलना बाकी है. Settled दिया होता है, insurance claim settled या received या insurance claim recovered, तो bank. Next one. 22nd, an amount 500 previously written off as bad debts now recovered. What do you mean by that? Previously written off as bad now recovered. Bad debts recovery. Bad debts recovery. बराबर है. Forum Nathani, can you tell me the entry for this? Account debit to bad debts recovery account. बराबर. Cash account debit to bad debts recovery account. Cash account debit to bad debts recovery account. That will be how much? 500. Cash to bad debts recovery will be 500 rupees. Perfect. Then 25. Exchange machinery of 1000 for cash 400 and furniture 300. Exchange machinery against cash and furniture. Rutwa, can you tell me the entry? Cash account debit, furniture account debit, loss on sale of machinery account debit to machinery account. Very good. Cash debit, furniture debit, loss on sale of machinery debit to machinery account. To machinery account. Okay. Cash debit, furniture, loss on sale. Cash कितना मिला आपको? 400. 400. Furniture 300 का आया. Loss is 300 and machine गया 1000 का. 31st entry अभी करना है कि बाद में करें, बताओ आप मुझे. बाद में करना है क्योंकि सेटलमेंट है ना, तो सेटलमेंट एंट्री बाद में ही करो. सब एंट्री डेबिट माइनस क्रेडिट लेजर से मिलने ही वाला है. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 ledger accounts. 5 ledger accounts. They are small accounts. एक machinery बड़ा होगा और cash बड़ा होगा. You can make 3 plus 2. Okay. Cash और machine on one side and बाकी 3 on other side. Anil Sunil purchase. Okay. So draw कर लो 5 ledger accounts quickly. Draw the 5 ledger accounts फटाफट. 5 ledger accounts. Draw fast. In the books of Raja, you're making cash account, Anil account,
Sunil account, machine account, and purchase account. ठीक है, 5 ledger accounts. Draw it up. Very first thing, what will you do in the ledger? Tell me. Date particular बाद में लिख लो, चलेगा. Just draw the columns and start. Write the account heads: cash, Anil, Sunil, machinery and purchase. Machine और cash बड़ा होगा, काफी entries हैं वहाँ पे. ठीक है? Come on, tell me. I want to take a start. What is the first thing you will be doing in the ledger? Follow. How do you start a ledger? Opening balance. Opening balance. What balance will cash have? Debit or credit? Debit. Debit balance. First March 12 because it's an asset. So to balance BD. To balance BD 8,000. Okay. Then let's go to Anil. What balance will Anil have? Can you look at the problem and tell me? Credit balance. Why credit? They're specifically given to you. दे दिया आपको credit. So buy balance BD. What does this indicate? Who is Anil for us as of now? He's a creditor. We are supposed to pay him 5,000. We owe him 5,000. What about Sunil? What balance will Sunil have? Debit balance. Sunil will have debit balance because they have clear cut mentioned in the problem. Sunil is having a debit balance. So we write their debit balance 4,000 rupees. Okay. What about machinery? इसके बारे में तो कुछ नहीं दिया. कौन सा बैलेंस होगा मशीन का? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस because it is an asset. Okay, because it is an asset. All assets will always have debit balance. Always, always. What about purchase? What balance will purchase account have over here? Debit or credit? Debit. Why debit? It's an expense. 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 All expenses also have debit balance. All expenses also have debit balance, indicating आपने अभी तक 3,000 का purchase किया हुआ है. Yes. Till now you have bought goods of 3,000. ठीक है? So 5 balances we wrote them down. Now the same thing. ऊपर वाले journal से आपको split करना है, post करना है. Okay? ऊपर वाले journal से split the entry and then post. Can you tell me the split entry of first one, Josh? Split entry of the first one. Cash account to capital account. How much cash to capital? Or 2,000. Nah. Cash. 12,000. No, cash to capital. Only cash to capital. What is cash to Ram's loan? 6,000. तो मतलब लोन में 6,000 आया ना कैश, तो ओनर कितना लाया होगा? 20. 14,000. कैश कितना लाया होगा ओनर? टोटल कैश कितना आया है बिजनेस में? 12,000. हाँ, उसमें से लोन में 6 आया, तो ओनर कितना लाया? 6,000. 6,000. ओके,
So cash to loan 6, cash to capital 6, and machine to capital will be 8. There are 3 entries over there. Did you get the split entries, all of you? पक्का समझा? तो पोस्ट करो सबसे पहला कैश टू कैपिटल. ओके, कैश टू कैपिटल साथ में करते जाओ. कोई डाउट है तो स्टॉप मी एंड आस्क. कैसे करोगे? तो कैश में टू कैपिटल 6000 और कैपिटल में बाय कैश. बट डू वी हैव कैपिटल अकाउंट? नो. देन कैश टू राम्स लोन. तो कैश में टू राम्स लोन 6000 और राम्स लोन में बाय कैश 6000. बट डू वी हैव राम्स लोन अकाउंट? नो. And then we have machine to capital. So go to machine. Here are machine. So machine में will write to capital 8000 and capital में buy machine. Again we don't have any capital account. It will be simply machinery में to capital. Story over. Okay, similarly try करो अभी सब लोग next वाला खुद से करते जाओ. posting purchase to Anil to cash to discount split and post. Come on, try. आगे भी करते जाओ सब posting. उड़ाओ पूरा. All the postings you can do, split and post. Come on, try. Purchase to Anil. Purchase में to Anil. और अनिल में बाय परचेज. Purchase to cash. Purchase में to cash. Cash में बाय परचेज. Purchase to discount. Purchase to discount. And discount receipt में बाय परचेज होता है नहीं. Purchase returns. Purchase returns. Purchase returns में बाय नहीं होता है नहीं. Loss to machine. To machine. 3000. Machine में price 3000. Loss to machine. Loss. Machine by loss. On sale of machine. We have So, yes, Ria. sorry. To
इसमें बाय कैश सेल्स नहीं है, बैंक टू सेल्स बैंक भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, डिस्काउंट टू सेल्स डिस्काउंट भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, मारो बोली मशीन लॉस नहीं है, मशीन में बाय लॉस machine and metal machine by clay. It's 2000. Cash to back this recovery, cash आएगा to tax that will be 500 22. Thousands of cash financial loss to machine cash machine 400 machine में by cash loss to machine by 300 machine में by loss on sale of machine 300. That's it. These are your postings. Okay. See the last entry. There are two entries over there. Settled Anil's account completely at. यहाँ तक हो गया पहले सबका posting. Okay, finish the postings. Then we move to the last one. Then check the postings. Zoom on to Sunil account. Two items. To balance and to machine. So just show the Anil account. Purchase by balance. To purchase return by purchase and by balance. चलो करो last two entries. देखो settled Anil's account completely at 4% CD. बताओ मुझे who is Anil for us looking at the account? Check. Creditor. Credit side is greater, na? So is your creditor. Acha, how much are we supposed to pay him? How will you identify how much are we supposed to pay him? 5,700. How did you arrive at that figure? 5,700 minus credit. Credit minus debit rather. Okay. Credit में था 6,200 minus debit में था 500 तो 5,700 देना है. But are we paying them 5,700? Are we paying him 5,700? No.
It's at 4% CD overall. 4% of 5,700. How much that comes to? 228. 228 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5472 आई थिंक, करेक्ट. अब एंट्री क्या होगी इसकी? थिंक वी आर सेटलिंग अनिल द क्रेडिटर. क्या होगा एंट्री? अनिल को पैसा दिया. Anil to cash to discount received. Anil to cash to discount receipt. So go back to journal and pass that entry. Anil account debit to cash account to discount received account. Anil account debit to cash to discount received account. Okay. देना था 5,700, दिया 5,472 and 228 is discount. Okay. Now ये खत्म हुआ अनिल, इसको पहले स्प्लिट करो, पोस्ट करो. ओके, फिर सुनील पे जाते हैं. पहले अनिल को स्प्लिट करो, पोस्ट करो. तो कैसे करोगे? अनिल टू कैश टू डिस्काउंट, अनिल टू कैश, अनिल टू डिस्काउंट, अनिल टू कैश. तो पहले जाओ अनिल में टू कैश, अनिल में टू कैश 5472, अनिल में टू कैश 5472 और कैश में आएगा बाय अनिल 5472. ठीक है. फिर अनिल टू डिस्काउंट भी है 228. अनिल में टू डिस्काउंट रिसीव 228 और डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय अनिल, बट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है नहीं तो मारो गोली. ओके, इज दैट क्लियर? Now the second one is Sunil. What is happening with Sunil? Sunil became insolvent and only 50% recovered. So who is Sunil for us? Please check. Debtor. Debtor. How will you recognize? Debit बढ़ा है तो debtor हो गया. अभी कितना पैसा लेना है from Sunil? 7,000. Sunil is a debtor. कितना पैसा लेना है? 7,000. कैसे ढूंढा? Debit minus credit. So 7,000 minus nil is 7,000. Yes. 7,000 लेना है. Is he paying us full 7,000? No. No, 3,500. हाँ, आधा दिया, आधा bad debt. 50% is bad debt. 3500 नहीं दिया और 3500 दिया. ठीक है. What journal entry we pass for this? Think guys. क्या होगा इसका journal entry अभी? Cash bad debts to Sunil. Cash bad debt to Sunil. तो ऊपर जाओ journal में और pass करो. Pass this entry, cash bad debt to Sunil. Cash bad debt to Sunil. Writing it over here on मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जरा जगह का कंस्ट्रेंट हो गया. 31st का एंट्री में ऊपर लिख रहा हूँ. 31st मार्च 12 एंट्रीज कैश बैड डेट टू सुनील. ओके, उससे लेना था 7,000, कैश आया 3500, बैड डेट हो गया 3500. ये 31/3/12 का एंट्री है. ओके, हाउ विल यू पोस्ट इट? कैश बैड डेट टू सुनील, कैश टू सुनील एंड बैड डेट टू सुनील. ओके, so cash to Sunil is 3,500. So go to cash. Cash में to Sunil 3,500 और Sunil में buy cash 3,500. Then we have bad debt to Sunil. Bad debt में तो to Sunil नहीं लिख सकते, Sunil में लिख सकते हैं buy bad debt.
by bad debt 3,500. ठीक है, खत्म, completes the problem. अब मुझे बताओ अनिल और सुनील में will you have any further balance in Anil or Sunil account? No, their account is settled. Account is settled, absolutely right. अकाउंट इज सेटल्ड, अकाउंट बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो कभी आपको कोई बैलेंस दिखने वाला नहीं है. तो ये टैली हो रहा है 6,200 पे, इट्स कॉल्ड एज अ टैलीड अकाउंट और अ बैलेंस्ड अकाउंट. इवन सुनील में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा. टोटल देख लो, आपको 7,000 ही मिलेगा. ओके, बाकी 3 अकाउंट्स का क्या सीन है, उसको क्या करना पड़ेगा अपने को? Other 3 accounts will need to balance, right? The remaining 3 accounts we need to balance. So cash, which side of cash will be bigger? Which side of cash will be bigger? Debit. Obviously debit, right? Cash में automatically you will find debit side is greater because it's an asset. So if the 6, 14, 22, 20, 27, 146 आ रहा है क्या डेबिट टोटल? प्लीज चेक. Only 27,000. 7046. Only 27,000. Okay, 27,046 it is, not 146. 27,046. 27,046, right? 27,046 minus the credit में है 5,400. 20,998. That's the balance. 20,998. That's the balance. Please check. By balance CD is 2998. 31st March 12. और 1st April 12 को बनेगा ये टू बैलेंस BD 20,998. Got it? Okay. By balance CD 2998 will become to balance BD. Move to Anil, Sunil हो गया. Machine. Which side of machine will be greater? Debit. Debit, because it's an asset. Okay. So 8 plus 4, 12. ये total दोनों बाजू लिख दो. Minus the credit. 3 plus 2, 9,000. 9 is the total, right? So your balance will be 3,000. Agree? So by balance CD बता रहा है, क्या बता रहा है ये 3,000 का balance? What is this indicating? 3,000 का balance machine में 3,000. मशीनरी है बिजनेस में. Yes, इतने का मशीनरी बिजनेस में पड़ा हुआ है. 1,412. 1,412 को you have got machine of 3,000 with you. That is the meaning. Okay. Purchase account में which side will be greater in purchase? Obviously the debit side, right? 4,800 आ रहा है ये. 4,800, right? So balance Yes. is also 4,800. By balance carried down is 4,800 and will become to balance brought down on 1,412. 4,800. Is that clear? Okay. That's your balance in the remaining. Show the machinery account. Yeah. So balancing part, tell me, anyone any doubts?
Yeah. Sum number 20. Half an hour, 30 minutes. Okay. पूरा journal करना है and yeah, 1, 2, 3, 4. 4 ledger accounts. Sum number 20. Karishma का Karishma. Page 39. Page 39. Sum number 20. 30 minutes. Start. Do it on your own. पूरा sum खुद से करो. पहले पूरा जर्नल करके एक ब्रेक लेना, फिर मैं डिस्कस करता हूँ जर्नल. नरेशन नहीं चाहिए. लेट मी डिस्कस द जर्नल, देन यू गो फॉर लेजर. कुछ मिस्टेक होगा जर्नल में तो लेजर ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. इसके लिए तो स्टार्ट करो. 20th सम. So can you send this PDF on the WhatsApp group afterwards? ट्राई करो 20. सम नंबर 20. To the journal, then the ledger. The books of Karishma. उसमें भी करेक्शन करना. इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस है. स्टार्टेड बिजनेस के जगह इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस. फर्स्ट लाइन इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस. ठीक है.
check the journal. करो discuss. Journal check कर लो. Started business with cash. Introduced in business. Introduced in business cash 10,000. Furniture 5. 1/5 of the cash is borrowed from Ajay. Your entry should be cash account debit 10,000. Furniture debit 5,000. To capital 13,000. To Ajay's loan 2,000. Is that right? Fine. Purchase furniture of 3,000 from X, paid fitting charges of 1,000. Your entry should be furniture account debit 4,000 to X 3,000 to cash 1,000. Furniture to X to cash 431. Furniture of 2,000 sold to Y for 1,500. Your entry should be Y account debit 1,500. Loss on furniture debit 500 to furniture 2,000. Then furniture of 2,000 exchange for machine 800 and cash 900. Your entry should be machine account debit 800, cash account debit 900. Loss on sale of furniture 300 to furniture 2,000. Correct? Paid carriage of 300 to Ram on behalf of Sham. Your entry should be Sham to cash. Sham to cash. Then Sham to cash 300. उसके बाद furniture of 3,000 lost due to fire. Insurance of 2500 claimed. Claimed मतलब मिलना बाकी है. So it is lost by fire account debit 500. Insurance claim account debit 2,500 to furniture 3,000. To furniture 3,000. Is that clear? Purchase goods of 12,000, pay 50%, 10,800, 5,400, and 5,292. So entry should be purchase account debit 10,800 to cash 5,292 to discount received 108 to X account 5,400. बराबर है? Purchase account debit 10,800 to cash 5,292 to discount received 108 to X 5,400. So goods of 8,005 7,600 half 7,000. Cash account debit. Next one is cash account debit 3,724. Discount allowed debit 76. Y account debit 3,800 to sales account 7,600. Is that right? Then amount of 300 received previously written off as bad debt. Cash to bad debts recovery. Cash to bad debts recovery 300 rupees. Simple. So settlement है और insolvency है वापस last में करना है. Leave the two entries. We'll do it after ledger. So करते जाओ ledger साथ में. Very first thing is opening balance. Start. What will be the opening balance of cash? Opening balance of cash will be debit by you are trying ledger on your own. जम रहा है ना सबको? Hello. How many accounts you have to make for this? 4 accounts. See na bottom they have given you. Cash, furniture, X and Y. Last line. और if you're comfortable with posting part, hello ledger. चलो try करो खुद से. I'm solving it. You can check. Don't copy. Just verify your answer. Okay. You can verify the answer. Come on खुद से करो. सर ये जो नीचे दिया है वो ओपनिंग बैलेंसेस ही है ना? हाँ वो ओपनिंग बैलेंस है. कभी भी लेजर के बाजू में जो बैलेंस दिया वो ओपनिंग ही रहेगा हमेशा. क्लोजिंग तो हम ढूंढेंगे पोस्टिंग करने के बाद. बना लो कैश में
Sir, furniture, in furniture, 2 capital would be 5,000, right? Oh, sorry. Yeah, 5. Sir, in X account, buy balance BD is 3,000. Oh, sorry. Furniture, it is 8. Cash 5, furniture 8, 5, 4. Ah,
23,850 आ रहा है कैश का टोटल. एनीवन हैज डन? नहीं. टू 4,574 आ रहा है कैश का टोटल. करेक्ट है. सेवेंटीन 764 आया था क्या उसका डेबिट क्रेडिट का टोटल? 17,764. What is the balance you are getting? Six 10. Hmm. That's your sum. These are the accounts. Balance is coming 6810 for cash. 6810. Yeah. Is it? Check. Balance is 6810. 6810. Just check it. Your solution. All four accounts. देख लो अच्छे से. जम रहा है सेटलमेंट एंट्री जमा सबको. हाउ टू सेटल x, हाउ टू सेटल y. x कौन था? क्रेडिटर था ना, तो क्रेडिट माइनस डेबिट एंड y वाज द डेटर, सो डेबिट माइनस क्रेडिट. उसका बैड डेट हो गया, इसका डिस्काउंट था. क्लियर? बोलो. एनी डाउट्स? जम रहा है कि नहीं लेजर? कल एक्स्ट्रा लेक्चर है इन द इवनिंग. आपको पेपर्स मिल गया है, एनएम वाला पेपर्स. ओके,
want to take a print out, can take it and keep, या फिर वहीं से आप solve कर सकते हो, कोई problem नहीं है. Okay, as it is आपको question paper में markings allowed नहीं है, तो कुछ markings ना ही करो तो बेहतर है, वहाँ पे वहीं से solve कर सकते हो. Tomorrow 6 to 7:30. 6 to 7:30 we are meeting in the evening for that extra lecture. Tell me. Clear? ईशा जी को समझ रहा है? ईशा जी. Yes. ईशा जी ने ऑब्जेक्टिव में थोड़ा गड़बड़ किया है, 3-4 मार्क का, 4-5 मार्क का. So when you are sending the papers? ऑब्जेक्टिव टेस्ट का you should get it by this weekend. वीकेंड तक मिल जाना चाहिए आपको. वीकेंड नहीं तो मैक्स मंडे तक मिल जाएगा. मंडे तक मिल जाएगा. ओके, जमा ये वाला क्लियर है सबको? देख लो अकाउंट्स. फर्नीचर का बैलेंस मिला 10,000. All of you got that? 10,000 balance in furniture. Verify each and every entry. Should be perfect. Are you all getting that? Cash account check कर लो, हर एक एंट्री पोस्टिंग. अमाउंट तो राइट होना चाहिए, अकाउंट भी राइट होना चाहिए. अमाउंट एंड अकाउंट बोथ मैटर. Correct. X and Y will self tally because they are settled. Okay. We stop at this point. Tomorrow similar problems, थोड़े और difficult. कल तो पेपर है, परसों we are meeting again for this. Okay. कल शाम को मिलना है 6 बजे. उसके लिए एक अलग ही बुक बना लेना. Make a separate notebook for papers. Okay. तो उसमें आप सब कॉलेज पेपर्स ही सॉल्व करना. क्या बुक्स के बीच में करोगे वापस ढूंढने में डिफिकल्टी हो गया. You make a separate notebook, क्योंकि अभी तो यूनिट टेस्ट है, फिर सेमेस्टर के होंगे, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट, सेकंड फाइनल, सबके पेपर्स वही बुक में करना. वो बुक ही पूरा पेपर का बनाओ, पूरा भर जाएगा, टेंशन मत. कल टेस्ट है. अरे कल 6 to 7:30 we are going to solve the college papers together. टेस्ट पेपर साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर क्लास में. ठीक है, लेक्चर है, टेस्ट नहीं है. 6 to 7:30 in the evening. Okay. And that's it all for the day. Okay. If you still have any doubts, you wait. Otherwise, you can leave. Homework आ जाएगा, solve करके भेज देना. Tata bye bye. See you. Bye sir, thank you Bye sir. sir, thank you.